Good morning, everyone. I'm still waiting for some more students to join. There are 11 people. Let your friends join, and then maybe we can start with today's streaming. Just start. I hope all of you have started with a project that I have given you regarding manure. And the link, if you want to see, is also there on my playlist, making organic manure from the waste of your kitchen. So that is something which is the project that you have to do whether when you are at home. And this project would be evaluated when you join back after break, whenever the lockdown basically lifted up. So till then, you just go through that video of manure making and start doing that project so that it becomes easy for you to understand the process which happens in nature. And you will be able to do it like in two ways. One, the role of microorganisms in biodegradation of waste in basically the environment. So this is one thing. And second is that you'll be able to understand how manures are basically put up in your plants, and it is also related to chapter crop production. So this basic activity, this one activity that I have sent you, will be solving purposes in two chapters: microorganisms as well as crop production, and its crop production that we are going to do next. I have uploaded one chapter today, that is conservation of plants and animals. That's a very important topic. And I have given the full chapter. Just go through the chapter. We'll take the doubts in the next live streaming of this chapter. And today there are many topics that I have to take in today's streaming, coming from different different people from you. So I was just waiting for some more students to join. It's less number of people that I'm seeing on my screen, but okay, let's start with the first query that I have got. The first query is from Mehek. What is residual oil? Now, Bide, I have talked about a topic called as petroleum. Now, petroleum is basically a fossil fuel that we get from petroleum wells. And petroleum is a crude oil which cannot be used as such. It has to be divided into different categories. It has to be divided into different categories. So and all these categories basically have a lot of uses. Into different usable form is called as fractional distillation of petroleum, and it is done in big refineries, in oil refineries. And these basically different factors like petroleum, gasoline, diesel, lubricating oil, they are all the fractions of petroleum which are used for different purposes. Residual oil, residue is something which is left over. So take the term from English. Residual is a verb. Basically the leftover part of the petroleum, the lowermost part which comes in fractional distillation, forms residual oil beta. And this residual oil children, I just want to ask whether the audio is clear. You can give me a response in chat whether I'm audible to you. I'm a little confused whether you are. Children, I have a little network problem. If you can just give me a thumbs up that am I audible to you? Okay. Not clearly. Am I audible, children? So, okay, residual oil is basically the last part of petroleum, which is used for three different things. One is asphalt, which is used for making roads better, and the construction of roads, and it is used also as an anti-rust. The second is paraffin wax. You all must have used Vaseline, and this Vaseline basically is used and for skin and for different things, for lubrication. So that Vaseline basically comes from paraffin wax. And the third is lubricating oil. What is lubrication? When there are two surfaces and they are coming in contact and there is a lot of friction between the two surfaces.
आपने कभी देखा आप दरवाजा बंद कर रहे होते हो और दरवाजे में आवाज आनी शुरू हो जाती है, या कोई मशीन चल रही है उसमें आवाज आनी शुरू हो जाती है. सो उस बेसिकली आवाज को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, दरवाजे में मम्मा क्या कहते हैं, यू हैव टू पुट ऑयल or you have to put any machine oil or something. So that machine oil is basically nothing but the lubricant. So that is a lubricating oil which is used in machine, which is used in industries, so that the parts can move smoothly over each other. Okay, so I think residual oil is clear. Mehek's question it was. Kinjal has asked me one question, that nuclear energy is a synthetic source of energy. But I'll take two things. One is synthetic sources of energy. Now, synthetic is anything which is man-made. Now, and natural is something which is gifted to us by nature. Now, when we are talking about synthetic resources, no, Kinjal, it is not the synthetic resource. It is a natural resource, because nuclear energy is coming from elements. With what elements? Special kinds of elements which are called as radioactive elements, which emits radioactive waves, which is used in nuclear reactions. And nuclear reaction, no beta, it is not a synthetic source of energy. It is a natural source of energy by which we harness this energy for basically many purposes, for useful purposes. Also, it can be for the harmful purposes. Now, next question that's the same child has asked is, does destructive distillation produce carbon monoxide? Because we are doing it in absence of air, and CO is formed when we burn oxygen. And yes, we can say that it is happening, because there is no oxygen. So if the oxygen will not be present, what will happen? Basically, the amount of carbon monoxide produced, of course, would be more than the carbon dioxide produced. Right. Next is it possible to burn anything in air? Yes, it is possible, but it should be kept in mind that the substance has to be combustible. Now, this is important. If the substance is combustible, that means it can catch heat, it can catch fire. So that is called as a combustible substance. All your fuels, the paper, the wood, the coal, they can burn. Non-combustible substances like metals, they cannot burn. So we cannot say everything, but yes, all combustible substances can burn. Non-combustible substances cannot burn. Okay, now the questions from Pushpal. Question number 1, why CNG is better than petrol? CNG, is better compressed natural gas that we are getting from the oil wells, and petrol is basically a component of petroleum. Now, CNG is better. CNG, Delhi is the first city in the world which has CNG run public vehicles. Now, CNG is better because of 3 reasons. I have told you also in the video. You can go back again to the video and see. 1, it has very less emissions. What do you mean by emissions? The gases released in the burning of CNG are much less as the amount of gases which are released in the burning of petrol. So yes, one thing, it is a cleaner because there is less emission. Second, it does not leave any foul smelling, is a foul smelling. So even if it is burning, you don't feel like it is burning. So it is less, it is a cleaner, it is a better fuel because it is, of course, it is present in abundant, it is giving more energy, less pollution. So this is a better fuel, CNG. Second, what are lubricating machines or CNG is better because it is also not giving gases which are also responsible for greenhouse gases and also for global warming. So this circle basically of greenhouse gases of global warming will be reduced. Acid rain can be reduced if we are shifting from shifting from the petrol to the CNG resources. Now, what are lubricating machines? I think I have answered it earlier. Anything which is reducing the friction between the 2 parts of a machine is called as a lubricating oil. That means you are providing a sheet of layer between 2 parts, and that sheet is basically preventing the collision from the 2 parts of the machine or any of the two pulleys or something in any industries basically.
Acha, next question that they have asked it, what is carbonization? But now, if you have read the new books, you have all new books. Carbonization, it is the process of conversion of dead plants and animals into fossil fuels. Fossil fuels are what? Carbon. So carbonization is formation of carbon. Now coal and petroleum are also has the major composition is carbon, so they are called as the conversion of dead organic plant and animal waste into fossil fuels is called as carbonization. The process is called as carbonization. Next question is from Vanshika. How woods are useful in cooking? But woods are not useful in cookings because wood actually produce a lot of gases. It produces a lot of smoke. It causes a lot of air pollution. So it is not basically something which is prescribed for using. But in some villages which are remote, the different sources of fuels maybe are not present. So what we are using wood. The people are using wood. They are cutting down trees, they are using wood, and because wood is easily available and it is free of cost. The most important thing is because it is free of cost, so people use directly. They cut trees, they directly use it and for making food. But it is not advisable because it causes a lot of pollution. Plus with a cutting down of trees on a large scale, you already know क्या हो जाएगा, deforestation हो जाएगा. डिफॉरेस्टेशन के बाद क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा साइकिल हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन शुरू हो जाएगा. सो इट इज अ विशियस साइकिल. वी शुड नॉट यूज वुड अगर हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं यूज करने के लिए. नाउ आप लोगों को समझ आ रहा है? आई थिंक अभी I can read in the chat. Ritu Bansal is asking what is gasoline. But gasoline is another name for petrol. So you call it gasoline or you call it petrol. It is just the same thing. So it is alternative name of petrol. One question Vanshika has asked is what about residual oil? Residual oil, but I have taken in the first question. The first question I've taken is residual oil. I think it is clear. Products of coal. There are three different products of coal: coke, coal tar, and coal tar, and coal gas. And what is coke? Coke is the best, basically, which it is 90% carbon. So it is a very, very good fuel to burn because it has very high calorific value, and it basically can be used in industries. It can be used in domestic purposes. So it is a very, very good fuel. Coal tar and coal gas are also used in synthetic dyes, in paints, in explosives, in drugs, in medicines. So that is the use basically. And coal gas is also can be used domestically and in industries. Now, the questions from Ishpreet. Coal reserves will last. I think this question, many, I think 8-10 children, I cannot name everybody, but they have asked the same question. बेटा जो मैंने आपको assignment भेजी थी उसके hot questions हैं. I think many people have doubt in this. Now, the first question, the first doubt I have received from 3-4 people is coal reserves will last for 100 years, it is believed. Do you think we need to worry? But of course we don't need to worry, we cannot say, but we need to um, we need to look about it. We have to look about it that what will we do, what will the future generations do when there would be no energy resources. Now think about our life. Everything is running on fossil fuel. The electricity is generated from fossil fuels. All our electrical appliances are working on electricity which is being generated from coal, and gas industries are running on petroleum products, and your automobiles are running on petroleum products. So we cannot say so many things. Most of our life, if you see, is dependent on fossils. So we do need to worry what will happen when there will be no petrol on the surface of earth and when there would be no coal. Because once they are lost, they are exhaustible resources. Once they will be lost from the surface of earth, there would be no looking back. We cannot get them back.
ठीक है. So that it was always said, it's not like we should stop using them, but we should always use them judicially. Judicially का मतलब बेटे सोच समझ के हमने उनको यूज करना है. जहां पे भी हो सकता है हम प्रिजर्व कर सकते हैं. जहां पे भी, जैसे we have to switch off the electricity when it is not used, we can switch to alternative sources of energy. हम कुछ भी alternative sources of energies यूज कर सकते हैं. wind यूज कर सकते हैं. ये मैंने लास्ट टॉपिक में लिया था वीडियो के, अगर आपने देखा है. ठीक है. And these all basically things can be used instead of coal. So yes, we don't need to worry, but we definitely need to find out the alternative sources of energy. Second is, what steps you suggest for judicious use of fossil fuels? I just discussed, beta. We have to switch off the light. We have to switch off the water. We have to reduce the number of electrical appliances as much as we can. स्कूल आते हैं तो वी डोंट हैव टू कम ऑन स्कूटीज पे नहीं आना है. अगर थोड़ा घर पास है तो वी कैन वॉक, एंड व्हेन वी कैन वॉक वी आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बच रहे हैं. अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटीज है तो इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं. अभी भी इंडिया में ऑलमोस्ट 70% ऑफ द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम कोल इलेक्ट्रिसिटी. सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड, that by following certain measures, what we can do, we can control the use of fossil fuels. Now Ridhima is asking, fire outside our house at night and close our door, then there is a great shortage of oxygen. Why? Bete, there will not be great shortage. Of course, if there is fire outside, so the amount of air जो पहले present थी रूम में और आपने अब दरवाजा बंद कर लिया है, तो जो एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है रूम में, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट. ठीक है. तो वो हम ये नहीं कह सकते कि एकदम CO2 प्रोड्यूस होना बेटा शुरू हो जाएगा. इट विल टेक टाइम. और फायर भी अगर बहुत ज्यादा बड़ी फायर है, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर वो छोटी फायर है तो वो बहुत जल्दी एक्सटिंग्विश हो जाएगी और इतना लॉस नहीं होता ऑक्सीजन का कि वेरी मैसिव. यस, देन वी कैन से दैट द ऑक्सीजन बेसिकली कैन गेट रिड्यूस्ड इन द रूम. ओके. Yashika has asked the same question. What steps would you suggest for judicious use of fossil fuels? Beta, I have just given you, use water energy, use electricity which is produced from dams, जिसको हम hydropower कहते हैं. Hydropower should be more emphasized. Wind energy should be emphasized. Nuclear energy should be emphasized. So instead of fossil fuel, we should take all the different sources of energy. Okay, next is somebody has asked me, coke is an example of destructive distillation of coal. So is it harmful our body? No, beta, it is not harmful for our body. It is a very good fuel. It gives you a very, very high calorific value. The name has not been given, but I have taken the question, bache. No, it is not at all harmful for our body, beta. It is good. It is a good fuel क्योंकि उसमें carbon content बहुत ज़्यादा है बेटे. तो carbon content ज़्यादा है, so the fuel composition will also be good. मतलब the energy release would be good. That energy can be used in any of the different purposes and different processes, and it can be used. Now Parth has asked me one question. I should not take it. मुझे लेना नहीं चाहिए क्योंकि अभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी का डाउट था. ये कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ बेटा. डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन नाम आप देखिए कहाँ से आ रहा है, डेजर्ट से. व्हाट आर डेजर्ट्स? डेजर्ट्स आर प्लेसेस व्हिच आर डिवॉइड ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स नहीं है, डिजर्टिफिकेशन है. तो वहां व्हाट इज डिजर्टिफिकेशन? द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल. अगर आप डिफॉरेस्ट्रेशन कर दे तो बेटे इसके लिए मैंने पूरा थर्सडे एक नया लेना है, स्ट्रीमिंग में लूंगी इसको डिटेल में. कंजर्वेशन एक बार आप पढ़ लेंगे, आज वीडियो डाली है, प्लीज गो थ्रू द वीडियो सो दैट आपको चैप्टर पूरा अच्छी तरह से समझ आ जाए. उसके बाद मैं ये समझाऊंगी. लेकिन पार्ट डिजर्टिफिकेशन का मीन है बच्चे कि बिकॉज डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाती है, देयर इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, तो पूरा का पूरा एरिया जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है. और जब डेजर्ट में कन्वर्ट होता है तो वहां पे हम कोई भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, प्लांट्स नहीं ग्रो होते, सॉइल इरोजन हो जाता है. सॉइल इरोजन के बाद फ्लडिंग हो जाती है, रिवर्स फ्लो नहीं करती है, वहां से एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव नहीं करते, तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज डिजर्टिफिकेशन. ओके, नाउ मेरे आपने क्वेश्चंस पूछे, कुछ बच्चों ने नाम नहीं लिखे हुए हैं. So one is difference between petroleum gas and natural gas. But now
what is petroleum gas and natural gas bete? Petroleum gas is a gas which we are getting from petroleum wells. Okay, so the आपको पता है कि gases because they are light होती हैं बच्चे petroleum से, liquids are heavier. तो जब हम कहीं पे भी petrol wells को dig करते हैं या हम petrol निकालना चाहते हैं, पेट्रोल की प्रेशर से उससे पहले क्या आना शुरू हो जाता है, उससे पहले गैस रिलीज होनी शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस, और उसी गैस को पाइपलाइन से हम देते हैं जो घरों में आती है जिसको हम कहते हैं एलपीजी, विच इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और ये जो एलपीजी है दैट इज प्रेजेंट इन एवरीबडीज होम. हमारे घर में जो कुकिंग होती है दैट इज थ्रू एलपीजी सिलेंडर्स, या फिर किसकी वजह से होती है, इट कम्स थ्रू पाइप्स जिसको हम कहते हैं पीएनजी. ओके, तो वो हो गया पेट्रोलियम गैस. एंड व्हाट इज अ नेचुरल गैस इज डिफरेंट बेटे. नेचुरल गैस इज अ गैस व्हिच इज प्रेजेंट जहां पे पेट्रोलियम वेल्स नहीं भी हैं, जहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम कहते हैं नेचुरल गैस. जो पेट्रोलियम के ऊपर प्रेजेंट है पेट्रोलियम गैस, क्योंकि पेट्रोलियम के फ्यूम से रिलीज हो रही है, ऊपर आ रही है, और जहां पे पेट्रोलियम नहीं प्रेजेंट है वहां पे है, उसको हम कहते हैं नेचुरल गैस, व्हिच इज कॉल्ड एज सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हम व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं. ठीक है, ओके. एक क्वेश्चन है, अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम टेक्स प्लेस इन ऑयल वेल्स. नाम नहीं दिया बेटा. यस, अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम डू अकर इन वेल्स. वेल्स ऐसा मतलब नहीं कि कुएं हैं, बट यस देयर आर बिगर स्पेसेस ऑन द क्रस्ट ऑफ अर्थ जहां पे डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा हो गया होगा डेड ऑर्गेनिजम्स का, डेड प्लांट्स का, एंड दे वर बरीड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. Hence, उसमें pressure conditions लगी, heat लगी, and then they have been converted into petroleum. Yes, so they are present. Okay, but then now somebody has asked me, नाम नहीं है बच्चे. Okay, अभी गौरव बंसल मुझसे पूछ रहे हैं चैट में कि बेटे व्हाट इज पैराफिन वैक्स. ये मैं अभी लेटर लेती हूँ, अभी मैं वो वाले क्वेश्चंस ले लेती हूँ जो बच्चों ने मुझसे पहले पूछे हुए हैं. पैराफिन वैक्स आई हैव टू टेक, और प्रोसेसिंग ऑफ कोल आपने मुझे बोला हुआ है एक बच्चे ने, तो ये मैं अभी चैट के क्वेश्चंस बाद में लेती हूँ. अभी आपने एक बच्चे ने मुझे बोला था विदाउट नेम की सिंथेटिक सोर्सेस क्या होते हैं बेटे. सिंथेटिक जब भी हम बात कर रहे हैं बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक रिसोर्सेज, कोई भी चीज जो मैन मेड है, जो हम बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक. अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे वीडियो में, अगर अब आप इसके बाद दोबारा वीडियो देखोगे तो मुझे लगता है अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि जो हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सोलर सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, हम वॉचेस बना रहे हैं जहां पे हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर रहे हैं, सो दैट इज अ सिंथेटिक रिसोर्स. आप अपनी बैटरीज डालते हो, हमारी बैटरीज प्रेजेंट हैं, कार में प्रेजेंट हैं, तो वहां वो बैटरी क्या होगी, वो दैट इज सिंथेटिक क्योंकि वो मैन मेड है. सेल्स डालते हो आप अपने एसी के रिमोट में, टीवी के रिमोट में, वो जो सेल्स हैं बेसिकली बेटा वो क्या है, दैट इज समथिंग दैट इज बेसिकली अ सिंथेटिक रिसोर्स जो मैन मेड है, जो हम मैन मेड रिसोर्सेज को कह रहे हैं. दीज आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक रिसोर्सेज. ओके, अब बिना नाम की somebody has asked me what is the difference between CO2 that is कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. बेटा ये मैंने लास्ट टाइम भी लिया था, और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेल में समझाया है मैंने एयर पोल्यूशन में. प्लीज एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा वो वीडियो अगर आपकी मिस हो गई है. कार्बन डाइऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब आप फ्यूल्स को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट सप्लाई है, और जब इनसफिशिएंट सप्लाई होती है बेटे तो हम क्या रिलीज करते हैं, मतलब फ्यूल्स क्या रिलीज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो इसके लिए एक बार प्लीज एयर पोल्यूशन दोबारा देख लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी. हाँ जी, यूजेस ऑफ कंबशन ऑफ वुड करके किसी ने क्वेश्चन किया है बेटे. यूजेस ऑफ कंबशन ऑफ वुड इज यूज बेटे. अब नाउ थिंक अबाउट एरियाज जहां पे फॉरेस्ट है, कोई रिमोट एरियाज हैं, आइलैंड्स हैं जहां पे एलपीजीज अवेलेबल नहीं है, जहां पे केरोसिन अवेलेबल नहीं है स्टोव्स के लिए, जहां पे वी डोंट हैव मच रिसोर्सेज which can be harnessed for using for making food or for different activities, boiling water, making different things. तो वहां पे फिर हम क्या यूज कर लेते हैं, wood, because plants are available anywhere, so dry wood can be used for producing the required heat which is there. Now I am taking the example of paraffin wax. मैंने पहले भी लिया है बेटा, दोबारा ले रही हूँ. पैराफिन वैक्स जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ पेट्रोलियम का एक पार्ट है,
और ये पैराफिन वैक्स क्या है? बेसिकली वैक्स है बेटे। वैसलीन आपको अच्छी तरह से पता होगा, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन हम विंटर्स में बहुत यूज करते हैं। वो पेट्रोलियम जेली हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पेट्रोलियम से आई है, ठीक है, और वो पेट्रोलियम से आई है। पैराफिन वैक्स है, लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किन के लिए बहुत अच्छी है बिकॉज स्किन का मॉइस्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है। और ये पैराफिन वैक्स कैंडल्स बनाने में भी काम आती है, कैंडल्स। तो दोनों चीजें हम उससे कर सकते हैं यूज। हाँ जी, प्रोसेसिंग ऑफ कोल बेटे अब आपसे पूछा है, विच इज नॉट देयर इन योर कोर्स। पुरानी बुक्स में था लेकिन अब जो है प्रोसेसिंग ऑफ कोल है नहीं, सिर्फ एक लाइन है कि जब कोल को बेसिकली हम बर्न करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक स्पेशल प्रोसेस में जिसको हम कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो हम 3 मेजर कंपोनेंट्स उसमें से रिलीज होते हैं। एक होता है कोक, एक होता है कोल तार और एक होती है कोल गैस। तो ये 3 चीजों को आप पढ़ लो, प्रोसेसिंग ऑफ कोल अब कोर्स में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कैरोसिन एंड गैसोलिन। बेटे डिफरेंस आपने नहीं करना। कैरोसिन एंड गैसोलिन विच इज पेट्रोल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम के 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। कैरोसिन लालटेन्स और स्टोव्स में यूज होता है, और पेट्रोल बिकॉज वो थोड़ा बेटर है कैलोरिफिक वैल्यू में, तो वो कहाँ यूज होता है? इट इज यूज इन डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स लाइक स्कूटीज, कार्स, ठीक है, जितने भी स्मॉल व्हीकल्स हैं आपने उसमें यूज हो रहा है। I think I have taken almost all the questions and queries बेटे जो आपने मुझसे अभी पूछी हैं और जो आपने मुझे पहले बताई थी बेटे। I think I am through with the queries that you have asked me, and I don't think any. I am just looking at the chat. If any of the question is left, no, I think all questions are done. सीमा निकुंज, आई डोंट नो कि बच्चा कौन है वो, उसका कौन सी क्वेरी रह गई है तो आप एक बार क्लियर कर दें क्वेश्चंस। अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद मेरी तरफ से सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब प्लीज दोनों चीजें आप, यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली and please follow all the required chapter from sources of it, and also conservation that has been uploaded today. Thank you so much, children, for listening. Have a very good day. Stay safe, stay happy in your house, eat well, and help your parents wherever required, and do study, meditate, and exercise. Have a good day, children.